कैन नोट डाउन ऑल योर क्वेरीज। वी रिक्वेस्ट के बीच में आप कोई क्वेरीज ना पूछे। आपको कुछ भी क्वेरीज है या तो आप पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आफ्टर द सेशन हम ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड रखने वाले हैं। सो आई एंड प्रीत कड़िया विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज ड्यूरिंग दैट सेशन। सो टिल दैट टाइम आप अपने आप को म्यूट रखें। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ द प्रेजेंटेशन। Myself, Samir Desai, and I am the founder of Franchise Insider. Right. So let's start with the franchise business future. So हमने दो पर्सपेक्टिव देखे हैं. One is for the franchisor perspective, and another one. Is it visible to all? Presentation is. Okay, I'm sure it is visible to everybody. Right. So there are two perspectives. One is for franchisors, and one is for the franchisee. I'll start with the perspective of the franchisor because they are going to face the major challenges in the current market scenario. तो क्या challenges उनको आने वाली हैं? Let's have a look at those points. Challenges post COVID-19 for franchisors. So first challenge जो franchisors जो already franchise business run कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो leadership. आपको अपनी सारी लीडरशिप क्वालिटीज अभी आपको एग्जीक्यूशन में लानी है बिकॉज योर फ्रेंचाइजी एंड योर देयर स्टाफ इज लुकिंग एट यू, राइट? बिकॉज फ्रेंचाइजी आर नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिनेरियो, सच सिचुएशन। तो आपको अपनी सारी लीडरशिप एबिलिटीज उनको सपोर्ट देना है मोरली। दे आर कंफ्यूज ये चीज को वो कैसे हैंडल करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज द कमिंग टाइम, द कमिंग सिनेरियो। उनके स्टाफ भी आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारी सैलरी का क्या होगा, हमारी जॉब का क्या होगा, ये सिक्योर रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी टाइम पे मिलेगी कितनी मिलेगी। सो एज ए लीडरशिप पोजीशन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना है, मोरली उनके साथ रहना है। सेकंड फोरमोस्ट चैलेंज फॉर एनी रिटेल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट फ्रेंचाइजी, एनी इंडस्ट्री इज गोइंग टू फेस, दैट इज प्रॉपर्टी रेंटल्स। यस, जैसे मैम पहले से भी हम लोग बता चुके हैं कि कोई भी रिटेल बिजनेस, स्पेशली B2C बिजनेस, चाहे वो फूड बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, दे नीड अ ग्राउंड फ्लोर स्पेस, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। तो फॉर दैट वो हायर रेंटल वाली स्पेस सब लोगों ने एक्वायर करी हुई है। तो अभी के सिनेरियो में वेयर द बिजनेस इज नॉट वर्किंग, कंप्लीटली क्लोज डाउन है, लॉकडाउन है, सो हाउ यू आर बी एबल टू पे द रेंटल्स, क्योंकि आप रेंटल पे करेंगे तो आपकी कॉस्ट उसी में चली जाएगी। सो यू नीड टू सिट विद ऑल द प्रॉपर्टी ओनर्स। आपको सारे ओनर्स के साथ बैठना पड़ेगा, वन बाय वन उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, रीनेगोशिएशन करना पड़ेगा, या पॉसिबली आप उनको ऑफर कर सकते हैं मिनिमम गारंटी या रेवेन्यू शेयर फॉर कमिंग 6 मंथ। आपका जो सेल होगा उसका एक परसेंटेज आप ऑफर कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई टू कन्विंस के सिचुएशन और बिजनेस स्टेबल हो जाता है, देन यू विल स्टार्ट द रेंटल्स अगेन जैसे पहले था। थर्ड, यस, विदाउट मैन पावर यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस। तो स्टाफ सैलरी एंड सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनी रिटेल बिजनेस। तो आपको नाउ आई विल नॉट एडवाइज कि आप क्या सैलरी दे, कितनी दे ना दे, बिकॉज दैट इज इंडिविजुअल। आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोल रहे हैं, आपको कितने कॉस्टिंग आ रहे हैं, दैट इज प्योरली योर कॉल। बट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन योर करंट स्टाफ, सो पोस्ट कोविड-19 जब चीजें स्टेबल हो जाएगी तो वही ट्रेन स्टाफ जो काफी टाइम से आपसे जुड़ा है, ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ पाना और उनको ट्रेन करना विल बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो किसी भी तरह से ट्राई करिए सस्टेन करने की अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को। हाउ टू सेव टीम एंड कस्टमर फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ कोविड-19? यस, दैट इज अ बिगर चैलेंज। रेस्ट एवरीथिंग यू कैन मैनेज, बट अगर आपकी टीम ही एक्सपोजर में आ जाती है कोविड-19 के साथ ड्यू टू एनी रीजन, वो स्टाफ के साथ, उनके साथ जो भी रहने वाले आपके अदर स्टाफ है वो पूरे क्वारंटाइन में चले जाएंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई नई चैलेंजेस में ना पड़े, पूरी सेफ्टी रखिए, WHO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करिए, अपनी टीम को भी एजुकेट करिए कि वो उससे बचे रहें, इन्फेक्शन से बचे रहें। प्लस यू नीड टू मेक श्योर कि आपके कस्टमर भी इन्फेक्शन ना लगे। तो जितना हो मिनिमम, इवन आफ्टर ये स्टार्ट होने के बाद अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम एक्सपोजर हो मैन टू मैन, वो चीज को आप पूरा ध्यान में रखिए।
Some challenges shall be sector wise, F&B, retail. Just a second. I hope I am clearly audible to everyone. Just a second. Right. So some challenges shall be sector wise like F&B, retail, education, services, etc. बट इसके बारे में मैं डिटेल में अभी कंसिडर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी हैव अ स्पीकर विथ अस, तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग उसका हम बेनिफिट लें. बट यस, आई हैव अनदर सेशन टुमारो वेबिनार जिसमें हम इस चीज को डिटेल में लेने वाले हैं. कल 3:30 बजे आई हैव अनदर वेबिनार विथ वन बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो उसकी डिटेल में आपको इसके बाद शेयर करूंगा लिंक एंड एवरीथिंग. नाउ फ्यूचर में कौन सी ब्रांड्स, फ्रेंचाइजी ब्रांड्स विल बी सक्सेसफुल. ओके, तो जैसे हम पहले से बताते आए हैं, ब्रांड्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहने पड़ेगा अपनी फ्रेंचाइजी के साथ. आपके एसओपीज, आपकी प्रोसेसेस तो आपने शेयर करी है, बट नाउ आपके सेल्स क्या है, आप क्या फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू कम अप विद. पहले ऐसा होता आया है कि नए फ्रेंचाइजर्स थे, दे वर नॉट शेयरिंग ऑल द डिटेल्स, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग फ्रेंचाइजी, दैट्स इट. But now you need to be more transparent with your franchisee because these people are your babies. आपको इनको बड़ा करना है, तो अगर आप उन्हीं के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो एक ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा, राइट. तो हम तो यहाँ तक बोलते हैं आपके जो कंपनी आउटलेट्स हैं उनका सेल क्या है, उसमें क्या आप अर्न कर रहे हैं, वो भी आप शेयर करिए. क्या फ्यूचर प्लान, क्या नए प्रोडक्ट्स आप लेके आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज आप लेके आ रहे हैं, वो आप ट्रांसपेरेंटली शेयर करें अपने फ्रेंचाइजीज के साथ. द ब्रांड्स whose systems and processes are set, yes, जिनकी एसओपीज, प्रोसेसेस, जिनके सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, राइट, जो अभी मैनुअल चला रहे हैं फ्रेंचाइजी अपने, वो कहते हैं ना एक पेड़ी की तरह चला रहे हैं, दैट विल नॉट बी मोर सक्सेसफुल इन कमिंग टाइम, राइट. आपको प्योरली सिस्टम ओरिएंटेड बनना पड़ेगा. अगर नहीं है तो आपको उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा. जैसे कि हमने इस सिचुएशन में एडॉप्ट कर लिए नई टेक्नोलॉजी को, जूम जैसी एप्लीकेशन को हमने एडॉप्ट कर लिया, तो अब फ्रेंचाइजी को भी वो सारी चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेसेस को एडॉप्ट करना पड़ेगा. Financially sound and stable brands. Yes. Earlier, many people were thinking कि franchisee देना is like earning money. मैंने 25 फ्रेंचाइजी को अलग-अलग इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइजी दे दी, तो आई एम गोइंग टू अर्न मनी आउट ऑफ इट. इट इज अ मोर गुड बिजनेस. बट अभी ऐसा नहीं होगा. इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल एंड साउंड, फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात है, बट इट इज मोर ऑफ गिविंग मार्केटिंग, ब्रांडिंग सपोर्ट इन सच सिनेरियो, जिससे आपकी ब्रांड अवेयर रहे, आपकी फ्रेंचाइजीज को बिजनेस मिलता रहे. सो दैट इज अगेन अ क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजर. द ब्रांड हु विल थिंक फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ द फ्रेंचाइजी. यस, जो एस इवन पोस्ट लॉकडाउन से पहले भी हम सारे फ्रेंचाइजर्स को बोलते हैं, जो भी नए फ्रेंचाइजर्स हमारे पास आते हैं उनको भी हम गाइड करते हैं कि यू नीड टू थिंक फॉर द सक्सेस ऑफ द फ्रेंचाइजी. इफ यू बिलीव मैं खाली देने के लिए दे रहा हूं, 10 में से 5 चल गई तो भी ठीक है, वो अभी नहीं चलने वाला है. यू नीड टू थिंक ईच एंड एवरी फ्रेंचाइजी जो अपने हार्ड एंड मनी डाल रहे हैं, ही और शी शुड गेट 100% सक्सेस. उनको जो भी चैलेंज आ रही है 1-to-1 यू नीड टू सॉल्व. दोज आर योर बेबी. उनको कैसे सक्सेस करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वही ब्रांड अभी चलने वाली है इन फ्यूचर. नाउ दिस इज द पॉइंट. ऐसे काफी लोग जो हमारे वेबिनार में ज्वाइन हुए, दोज आर थिंकिंग टू ज्वाइन और स्टार्टिंग अ फ्रेंचाइजी बिजनेस, तो उनके लिए ये पॉइंट्स हैं. कैसा रहेगा फ्रेंचाइजी बिजनेस का फ्यूचर? तो लेट मी शेयर अप विद सम डेटा. इंडिया हैज वेरी लेस रेशियो ऑफ फ्रेंचाइजी एज कंपेयर्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज. यस, लाइक 10% इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू यूएसए. यूएसए में देखूं तो 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 70% रिटेल बिजनेसेस हैं जो फ्रेंचाइजी पे रन कर रहे हैं. Wherein in comparatively इंडिया में 135 करोड़ के पॉपुलेशन है, जिसमें सिर्फ 10% रिटेल बिजनेसेस हैं जो फ्रेंचाइजी पे है. सो आप देख सकते हैं अभी भी कितना बड़ा मार्केट ओपन है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन है, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री अभी तो मैच्योर हुई. पीपल वोंट हैव एक्स्ट्रा मनी टू बर्न. अभी के सिनेरियो में लोगों के पास एक्सेस फंड नहीं होगा कि वो ट्रायल एंड एरर करके बर्न करे, 10-20 लाख का लॉस करे, वापस से वो ट्रायल करे. सो डेफिनेटली वो एक सेफर ऑप्शन में जाना चाहेंगे.
पीपल विल लुक फॉर मोर एंड मोर सेफर बिजनेस ऑप्शन, जैसे मैंने पहले बताया। सो दैट इज वाई वो जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट करके पैसा बर्न करें, राइट। ऐसा उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा टाइम बचा नहीं है, तो दे विल लुक फॉर अ सेफर बिजनेस ऑप्शन। इन करेक्ट मार्केट पीपल विल लुक फॉर हैंड होल्डिंग। सभी को एक मेंटर चाहिए। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक रिस्क लगता है, सो दैट इज व्हाई यू नीड अ मेंटर, एक गाइड जो आपको कदम कदम पे गाइड करे, सपोर्ट दे। सो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी में पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंचाइजर आपको हर कदम पे गाइडेंस दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है। फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा ये मानना है पॉसिबली more and more new people will join franchisee business and many will diversify from their current business. Yes, जैसे अभी के मार्केट सिनेरियो में we were thinking कि अभी कौन लोग इंक्वायरी करेंगे, बट सरप्राइजिंगली मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं अभी, आई डोंट नो कहाँ से रेफरेंस से लोग आ रहे हैं। हर एक इंडस्ट्री में जो इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रहे हैं, those who are struggling, they want to leave their business or they want to diversify from their business. So I'm getting calls from some SMEs, from textile business. Sir, we are not happy. We want to diversify. We want to start a small franchisee business in X budget or Y budget, right? So people are planning to diversify currently also. वो अभी से plan कर रहे हैं कि अभी मैं नए business में कैसे diversify हूँ। Same way, हालांकि ये इतना बड़ा plus point नहीं है, but somewhere ऐसे data बता रहे हैं कि many people are going to lose their job, maybe from lower मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट। ऐसे लोग होंगे जिनके पास सेविंग भी होगी 2 लाख से लेके 15-20 लाख तक की। सो डेफिनेटली ऐसे लोग को तुरंत जॉब नहीं मिलेगी। सो दे वुड लुक फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन न्यू बिजनेस। उनका बजट शायद कम हो सकता है, 2-5 लाख का हो सकता है, 10-20 लाख का हो सकता है, बट ऐसे नए लोग मार्केट में आएंगे जिनको नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए। सो अल्टीमेटली व्हेन यू डोंट नो न्यू बिजनेस एंड हैव नो टाइम टू लर्न, आप नए बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सीखने के आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, यू डोंट वांट टू स्पेंड इयर्स इन डेवलपिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्क्रैच से डेवलप करने में आप इतना समय स्पेंड व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। सो इन दैट केस फ्रेंचाइज इज द ओनली ऑप्शन टू एंटर इन। दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसमें आप एंटर हो सकते हैं जब आपके पास इतनी सारी लिमिटेशन है। नाउ व्हाई पीपल शुड प्रीफर फ्रेंचाइजी? So let's have a look at some of the data. अगर आप खुद का स्टार्टअप चालू करते हैं कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी स्टार्टअप, तो सक्सेस रेशियो स्टार्टअप में ऐसा कहा जाता है पहले साल में ही मैक्सिमम फ्रेंचाइजी 70% बंद हो जाती है, अगले 3 से 5 साल में 90% फ्रेंचाइजी स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, जबकि फ्रेंचाइजी में इससे रेशियो इज 80 to 90%। ब्रांड स्टार्टअप में आपको जीरो से एस्टेब्लिश करना है, जबकि इन फ्रेंचाइजी यू नीड टू एस्टेब्लिश, आपको एक एस्टेब्लिश कंसेप्ट मिल रहा है, टेस्टेड कंसेप्ट मिल रहा है। रिस्क बहुत हाई है स्टार्टअप में, जबकि फ्रेंचाइजी में इट इज कंपैरेटिवली लो। टाइम टू मार्केट बहुत समय ले लेगा स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने में, जबकि फ्रेंचाइजी में बहुत कम टाइम लेगा। आप 1 से 1.5 साल में कोई भी फ्रेंचाइजी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की मैं बात करूं तो किसी कोई भी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं होती है इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वेयर इन फ्रेंचाइजी इट इज बीन प्रोवाइडेड बाय कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। टेक्निकल नो हाउ सब कुछ सेल्फ डेवलप करना है स्टार्टअप में, जबकि फ्रेंचाइजी में आपको फ्रेंचाइजर की तरफ से दिया जाता है। बिजनेस मॉडल इज क्वाइट रिस्की, wherein it is acceptable because it is tried and tested. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी बिजनेस में कंटिन्यूस डिमांड होती है, स्टार्टअप में बहुत हाईली आपको करना पड़ता है, पैसा बहुत डालना पड़ता है, बहुत टाइम एंड एनर्जी डालनी पड़ती है, जबकि फ्रेंचाइजर में ऑलरेडी फ्रेंचाइजर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है, सो इसमें आपका टाइम कम जाता है। रिटर्न्स 5 से 6 साल लग सकते हैं अपने स्टार्टअप में आपको आरओआई मिलने, जबकि वही चीज फ्रेंचाइजी में आप 1 से 1.5 साल में आप अपना आरओआई अर्न कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले से बताते आए हैं अपने फ्रेंचाइजीज को। कौन सी पॉइंट्स होते हैं बिफोर बाइंग द फ्रेंचाइजी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमने इस पे यूट्यूब का एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, जो हमारी यूट्यूब चैनल है फ्रेंचाइज इनसाइडर, उस पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे, मैं फटाफट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आस्क हाउ दे ट्रीट देयर फर्स्ट फ्रेंचाइजी, अपनी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हैं। द सक्सेस रेट क्या है अपनी करंट ऑपरेशनल एंड पास्ट क्लोज यूनिट, इनके कितने एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी हैं, बंद हो गई, क्यों बंद हो गई थी यूनिट्स, उसको आप चेक करिए।
उनके फ्रेंचाइजी फीस क्या है, उनका कैपेक्स का ब्रेकअप क्या है, वो आप पूछ सकते हैं। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को क्या सपोर्ट दे रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो क्या टाइमली रॉ मटेरियल मिल रहा है उनको, प्रोडक्ट्स उनको मिल रही है, वेंडर टाइप कैसा है, कुछ भी नई प्रोडक्ट आ रही है, नई चीजें आ रही है तो कम्युनिकेशन डाउन द लाइन प्रॉपर है कि नहीं है, वो आप चेक करिए। सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, जैसे मैंने बताया अभी हर एक चीज सिस्टम पे जाएगी, एसओपी पे जाएगी, सॉफ्टवेयर के थ्रू होनी चाहिए, तो वो उनका अंडरलाइन है नहीं है, ये आपको चेक करना चाहिए। आरओआई कितना जल्दी मिल रहा है अपनी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनके एग्जिस्टिंग कंपनी आउटलेट का कैसा है, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी आउटलेट का कैसा है, वो आप चेक करिए। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी की तरफ से कितना हो रहा है, एंड एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गाइडलाइंस मिल रही है, दैट यू नीड टू चेक। नाउ ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। इसके अलावा अब हमने कुछ आइडेंटिफाई किए नए पॉइंट्स कंसीडरिंग दिस लॉकडाउन सिनेरियो, कोविड-19 सिनेरियो। अब और चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर बिफोर कमिंग इनटू फ्रेंचाइजी बिजनेस। You should look for a franchisee which is more suitable to your current profile, nature and market trend. Yes, आपकी करंट प्रोफाइल है, अगर आप एक मिल ओनर है और सडनली आप सर्विस सेक्टर में आना चाहते हैं तो शायद वो सूट नहीं करेगी आपकी प्रोफाइल को। तो आपका करंट प्रोफाइल क्या है, आपका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है और करंट मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अनुरूप आप फ्रेंचाइजी का सिलेक्शन करिए। गो फॉर अ लोअर कॉस्ट फ्रेंचाइजी देन योर बजट। जी हाँ, वी आर गाइडिंग टू इन्वेस्टर कि आपके पास मान लीजिए 50 लाख है, 1 करोड़ है, डोंट पुट इन ऑल योर मनी इन वन फ्रेंचाइजी, रादर गो फॉर अ 50% कॉस्ट। इफ यू हैव 50 लाख ऑफ बजट, 25 लाख के बजट में चाहिए, बाकी का पैसा आप साइड पे रखिए अपने 6 मंथ के रनिंग कॉस्ट के लिए। लोकल मार्केटिंग 6 महीने का आप करने के लिए उसको साइड पे रखिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है, पुट असाइड रनिंग कॉस्ट फॉर 6 मंथ, लोकल मार्केटिंग बजट के लिए पैसा साइड पे रखिए। गो फॉर अ फोको और सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजी ब्रांड। जी हाँ, फ्रेंचाइजी एंड कंपनी ऑपरेटेड को हम हाईली प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर आप अगर इसमें एंटर हो रहे हैं, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, व्हाई टू वेस्ट टाइम इन गेटिंग ट्रेन। आप हर एक चीज सीखने में टाइम लगाएंगे तो इट विल टेक टाइम। सो गो फॉर अ फ्रेंचाइजी एंड कंपनी ऑपरेटेड जिसमें आपको सर्टेन सपोर्ट, मेन पावर का सपोर्ट, डे टू डे ऑपरेशन सपोर्ट कंपनी की ओर से दिया जाता है, ऐसी फ्रेंचाइजी को प्रेफरेंस दीजिए। चेक फाइनेंशियल साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजर, जैसे मैंने पहले बताया उसकी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है उसको डेफिनेटली चेक करिए, ताकि वो आपको ऐसे सिचुएशन में आपको सपोर्ट दे पाए। हु कैन हेल्प फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। नाउ मैंने सारी चीजें आपको बता तो दी, पर ये आपको कौन गाइड कर सकता है। सो इन फ्यूचर रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज हु आर इनटू क्रिटिकल थिंकिंग विल हैव बेनिफिट। जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पढ़े हैं, वही फ्रेंचाइज कंपनीज इसमें ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। यू शुड look down to align with such consultant or hire them for you. We as franchise insider do this all for our clients. जी हाँ, whether that they are franchisor या franchisee, हम हर एक लोगों को गाइड करते हैं किस तरह से। Let's have a look. In short, फ्रेंचाइजर को हम कैसे ड्यू डिलीजेंस करते हैं, गाइड करते हैं। कोई भी नया फ्रेंचाइजर हमारे पास आते हैं फ्रेंचाइजी मॉड्यूल डेवलपमेंट करने के लिए, तो हम उनका पूरा ड्यू डिलीजेंस करते हैं। वी आस्क फॉर कंप्लीट डिटेल, उनके क्वेश्चन के थ्रू रिटर्न में उनका वेबसाइट, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नंबर ऑफ ब्रांचेस, उनके यूनिक पॉइंट्स क्या है, उनके टर्नओवर क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके पास एक्सपेंशन का बजट क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज हम फ्रेंचाइजर को पूछते हैं बिफोर टेकिंग देयर एक्सक्लूसिव असाइनमेंट। वी आस्क व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट ब्रांड विल प्रोवाइड टू फ्यूचर फ्रेंचाइजी। यस, वो अपनी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो आप पूछिए। We see the kind of systems and processes are in place there or they are willing to put into place. उनके पास अभी SOPs क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोसेसेस क्या है, वो हम चेक करते हैं। अगर नहीं है तो वो एडप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो सब चीज हम चेक करते हैं। We mentor them to always support and think for success of the franchisee. Yes, हम उनको मेंटर करते हैं कि वो फ्रेंचाइजी के बेनिफिट को ऑटोमोस्ट प्रायोरिटी दे। We emphasize them to offer FOCO model or similar type of support, train manpower to franchisee. जैसे मैंने पहले बताया, जितना वो सपोर्ट अपनी फ्रेंचाइजी को देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। नाउ फ्रेंचाइजी में हम ड्यू डिलीजेंस क्या करते हैं, गाइडेंस क्या देते हैं। इन्वेस्टर्स जो हमारे पास आते हैं
उनका भी हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं और उनको हम गाइडेंस करते हैं। वी आस्क द इन्वेस्टर्स अबाउट देयर बैकग्राउंड एंड करंट प्रोफाइल उनकी क्या है, वो भी हम उनको पूछते हैं। वी आस्क देयर बजट एंड इंटरेस्ट एरिया, इन्वेस्टर को हम पूछते हैं कि उनके पास क्या बजट है, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। वी चेक हाउ मच पेशेंस, उनके पास कितना पेशेंस है फ्रेंचाइजी बिजनेस में आने से पहले, या वो ऐसे ही आ जाते हैं कि मैं फ्रेंचाइजी में एंटर कर दूंगा और 2 महीने में मैं आई स्टार्ट मेकिंग मनी। अगर वो गलत फहमी में है तो उनके हम गलत फहमी हम दूर करते हैं। वी एडवाइज नॉट टू पुल ऑन मनी एट अ टाइम इन फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने पहले बताया हम उनको गाइड करते हैं, आप सारा पैसा मत डालिए, 50% पैसे से स्टार्ट करिए। वो फंड आपका जो है आप साइड पे रखिए रनिंग कॉस्ट के लिए, मार्केटिंग कॉस्ट के लिए। वी सजेस्ट टू प्रीफर फॉर अ फोको और सिमिलर टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी। यस, इन्वेस्टर को भी हम गाइड करते हैं कि फोको टाइप फ्रेंचाइजी हो या फ्रेंचाइजर आपको जिसमें सपोर्ट दे रहे हैं ऐसी फ्रेंचाइजी में एंटर हुई है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, हम क्या क्या चीजें करते हैं, फ्रेंचाइजी फ्यूचर क्या है, मैंने ये गाइड मतलब आई हैव शेयर्ड ऑल डिटेल विथ यू। दिस इज अबाउट फ्रेंचाइजी इनसाइडर। इसके बाद आप ये नंबर या हम आपसे शेयर करेंगे स्क्रीन पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So I'll not take much time and I'll coming to the speaker. मैं उनके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। मिस्टर प्रीत कड़िया, राइट, ही इज द ओनर ऑफ ब्रांड अर्बन खिचड़ी एंड दक्षिणेशन इन द पार्टनरशिप विद मिस्टर नीत लाखानी, उनके जो पार्टनर है, प्लस ही इज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ प्रीत कड़िया। इन्होंने he has done his hotel management, he has served with Oberoi, Marriott and IHG hotel groups. He is entrepreneur by passion, he is passionate about food industry. Urban Khichdi, 50 plus variety of khichdi's he is serving into that, and Dakshination is purely authentic South Indian cuisine. So I'll stop sharing the screen and I'll hand over to Mr. Preet Kadia. Hello everybody. Abhijit bhai. Hello everybody, my name is Preet. I am one of the founders for Urban Khichdi and Dakshination. So how we came up with the idea of Urban Khichdi is that आज अगर आप देखेंगे तो there are basically 2 times when people would want to eat outside. One is आज मुझे बाहर खाना है, you know, today some celebration, some birthday, or it's a weekend, we don't want to cook at home, और मुझे बाहर खाना है. And the second is जब मुझे बाहर खाना पड़ता है, that I'm staying away from home, I'm not living with my family, my schedule is so tight that I cannot afford to cook at home, or my life is very hectic. So basically, after doing a lot of market research, we found out that the amount of people who have to eat outside is increasing even in tier 2 and tier 3 segments. Tier 1 cities like Bombay, Bangalore, Delhi always had a lot of people like that, but smaller cities like Ahmedabad, Surat, Baroda, Rajkot, also now there is a lot of people who are traveling from outside, who are living away from their families, doing jobs there, and have a very hectic schedule. So they have to eat outside, not by choice, but because their life asks them to do that. So now looking at the market, आज अगर आप देखेंगे तो आपको majorly junk options बाहर मिलेंगे, या heavy Punjabi Indian cuisines है, pizzas है, pastas है, or a lot of experiential cuisine. So when we go to experiential cuisines or junk food, what happens is that your body does not permit you to eat there every day. Your body is not built to consume that every day. So the call was to come up with something which is very healthy for your body. It doesn't play around with your health. 2, it connects with almost everybody, irrespective of Marathi hai, Gujarati hai, Punjabi hai, South Indian hai. It had to connect with you. And if you are eating probably out every day, it had to be a very pocket-friendly affair. So the only thing that came up to our mind was khichdi. So the biggest challenge was that khichdi had a very boring history. You know, कि आज मैं बीमार हूँ तो खिचड़ी खाऊंगा, या कुछ नहीं सूझ रहा तो खिचड़ी खाऊंगा. So khichdi needed a facelift. Khichdi had to be, you know, made into a very hip or a happening product. So that is when Urban Khichdi was designed. Urban Khichdi serves more than 50 varieties of khichdi, including khichdi sizzlers, fusion khichdi's like Mexican khichdi's, Thai khichdi's, Italian khichdi's. So it has over now, we are about
2 years, we will be 2 years old this July, and we have been able to strike a good tuning with the youth who's staying away from their families, working alone, away from home. And in general, the retention ratio of any restaurants, or in terms of food and beverage industries, the repeat ratio into a restaurant is somewhere between 12 to 16%, whereas Urban Khichdi has managed to strike a retainership ratio of about 35%, which varies from outlet to outlet. The highest is at 42%. So Urban Khichdi has been successful in creating a trend wherein eating out and eating healthy at the same time at a very pocket friendly price is now in. So that is something about Urban Khichdi. Now I would come to our franchise models. Our franchise models, as of now, we offer a FOCO model, which is franchise owned and company operated model. We strongly believe that a person who is an expert at something should handle that forte. So our models have been developed in such a manner that all the franchise owners invest into setting up a shop, use their local contacts to market the product locally. Rest all the operations ranging from manpower hiring, training, operating a restaurant, procurement of raw materials, including bookkeeping, up to filing of your GSTs, is taken care by us. Now, how we do that? Everything that we do is on a cloud. Everything that happens in the restaurant is accessible by you sitting anywhere across the globe, whether it be a small cash voucher of 100 rupees. So you can access that cash voucher sitting from your home. A scanned copy of that cash voucher with a 100 rupee bill will be attached with every single expense. Every incoming invoice of a grocery or a vegetable or a dairy is uploaded on real-time basis, which you can access across the. So basically, when you run a business, you always want to keep an eye on all your expenses. Where are the expenses going? So all our softwares are custom designed and are cloud-based, which enables you to access them across the globe. All real-time updations happen. So sitting anywhere in the world, you can access how much material is there in your store, how much worth of goods are lying in your store, what is the amount that you have procured so far in the month, what are the sales, what are the sales channels, how much is the online sale, how much is the offline sale, what has happened through a credit card, cash. Everything is accessed through a single touch. So that is how we run and manage our outlets. We have a dedicated team that does regular audits, which are surprise and planned. There are mystery audits that are happening. Somebody goes down as a customer who is given a checklist to check what all our systems needs to be followed by every outlet. All the managers are unaware of their visits, and we keep a very real-time track of everything. So Urban Khichdi always believes in being a market disruptor. Urban Khichdi always believes in not spending extra buck on something like an interior, not making something very lavish. That worst case scenario, if you tend to fail, everything is movable, everything is resellable, everything can be taken out. Today's youth, today's generation will be eating out more and more, are eating out probably 5 times a week. So they do experiment a lot. They do try new places. So we never ever tell anybody to put a lot of eggs into one basket. Even if you have funds for multiple, even if you have a lot of funds, we always tell you to invest into multiple outlets rather than making a single one big outlet. So that is about us. Dakshination was a South Indian baby. We already have 2 outlets. We are 3 months old into it. It is a 100% process-driven outlet. The teams have been trained. The raw materials are supplied in a manner that teams just have to measure the amount of water that needs to be put into every product that we serve. COVID-19 is unfortunately a disaster that happened to almost every industry. The times ahead will be very difficult. I would not say the economy will be up and running in the next month or next 2-3 months to come.
Yes, the times ahead will be very, very difficult. Uh, the support that we provide during these times is that we will be operating on minimalistic manpower. Our team is trained to multitask. We do not have managers who would refuse to pick up plates. We do not have captains who would refuse to serve. We will not have chefs who would refuse to do a cutting or chopping. So our team is trained from day one to multitask. We always believe in operating at as minimum staffing as needed. There are regular audits. There are regular inputs from our end in terms of local marketing. We charge 8% as management fee on the total sales, out of which 7 goes towards management fee and 1% goes to a pool that is dedicated towards brand level marketing. I'm happy to share our last year's marketing exceeded, instead of 1%, we spent about 12% on brand level marketing in terms of radio, in terms of newspapers, in terms of local sponsorships, having local RJs visit us, having local celebrities visit us and be tagging them on their online pages, etc. So post COVID, a lot of things will change. There would be, we are working on having industrial scale sanitizers procured so that the restaurants can be sanitized at least twice a day. We are in talks with our interior designers, which help us to maintain distance seating, because social distancing will not be going away, at least for a few years to come. It has to be maintained. Our team is already been trained on how to do a zero touch order taking, zero touch service. Our team has already been briefed on regular hand washes, regular sanitizing of all kitchen surfaces, utensils, knives, chopping boards, ladles that you use. So yes, and we will be marketing that very aggressively, because in the upcoming time, transparency and hygiene is the foremost criteria that the diners will be looking at. So I'd love to take any questions that you would want to ask. ઓછા સ્ટાફ જોડે મેનેજ કરવાનું શીખવું પડશે. બરાબર, આ ફ્યુચર છે તમે કહો. Yeah, everybody, if you have any query or question, you can either ask or you can enter into the chat box. It can be related to Urban Khichdi Dakshination or how he is going to handle. You can ask to Preet Kadi, or if any generalized question about franchising, you can ask me. We both are here. Also, I missed out on one of the very important points. Yes, the times were difficult. March, April, May are looking very difficult. We have been able to retain more than 80% of our staff in a manner that we retain the highly trained staff and we don't have to start from square one again. We have worked out a way that is not a burden on our franchise owners. We will be doing part payments to all the retained employees. We will not be deducting any salaries, but have worked out an installment system which is not a burden on the employers, and also the team is happy with not their salaries not being deducted. Preet bhai, we have got a question from Mr. Bhavin Pandya in chat box. How do you see the food business going ahead in next quarter? So like I said, food business, as I said, is a very trending business. Now what happens is the times will be divided. Your expenses towards luxury, your expenses towards leisure, your expenses towards spoiling yourself will be definitely cut down. Your expenses will be more towards the need-based expenses. Now again, like I reiterated, we are not a weekend brand. We are not a Saturday, Sunday apne business kariye na baki divso mein na kariye. Our variation between a weekday and a weekend is about 20-30%, which is about 60 to 80% for all other restaurants. So we are a need-based product. We are there for people who are staying away from home, who do not have places to cook their food, who do not have time to cook food.
So we provide them with pocket-friendly, hygienic, home-like food, which probably even if you consume every day, you will not feel you won't be playing with your health. So those are the places where we come in, and food business, probably very high end or a luxury segment, will definitely be taking a hit. Online business will mushroom a bit compared to dine-in segment. So as I said, we'll be aggressively marketing on the hygiene and social distancing factor, and uh, rest the I think it will be fine in probably 6 to 7 months to come. Hello. Yeah. Yes. Yeah, Mr. Meet Kadia, you have mentioned very interesting point that you are focusing on zero touch service Yes. to the clients. So Yes. can you just elaborate how would you able to manage that? So like Sir, I can said you that introduce yourself? Just a second. Sir, can you introduce yourself? Yeah, myself Swapnesh Sheth. Okay, fine. so like I said that we are very highly software driven. So we already have QR codes on the table which you can scan with any smartphone, which would give you an access to our menu. You can directly place order through your phone while sitting in the restaurant. A print would happen at the cashier and in the kitchen, which they'll prepare your food. The food will come to the table. The steward would ask you before servicing to you that would you want me to serve? If yes, he would go back, sanitize his hands, come back, and then probably serve you. While you're seated at the table, everything that is placed on your table, including from cutlery, crockery, dining ware, your seats, your tissue papers, everything is sanitized on a very regular basis. Okay. One more interesting Is question. it going to something add the cost to your operational expense, and would it be passed on to the customer? Not really. The cost of doing that will not be very major, and only additional costs that we will be facing will be the chemicals that we have been using. Like before this, we used to sanitize kitchen daily. Now it has changed to doing it 4 times a day. The cost of masks and gloves that were not being used by the waiters outside initially it is a very nominal change in cost. But I think with changing times, it is a must needed expense. Okay. Thank you. There is a question from Mr. Dinesh Maheshwari in a chat box. How do one franchisee delivery kitchen only format? Means after paying heavy commission to aggregators, you hardly have lowest margin with you, which is nearly 10 to 12%. How do you charge royalty on this kind of margin? Franchisee will not earn anything after our royalty. So he's worried about the what franchisee is going to earn about giving after giving royalty and this. Dinesh, as of now, we are not operational in a 100% cloud kitchen format because I personally see that it is a bubble. We are still exploring how much feasible an online business is, unless the demand is very high, like say in a city like a Bombay or a Pune or a Bangalore for that matter, when you're doing say about 500-600 orders a day. Unless you reach that point, unless you reach that amount of orders, whether a franchise outlet or a self-sustained outlet, it does not make sense into investing into a cloud kitchen. Right. There is one more question. I don't know his name. It's Galaxy 36, but I don't know. It is quite. How much businesses come from each outlets from Zomato, Swiggy, etc. Like revenue profit of each month? But I think it will vary outlet wise. It will vary from area to area. We have Mr. Japan Patel here from our Kudasan outlet. So our pilot outlet at IIM is doing about 55% business online, whereas our Kudasan outlet is doing about 20% business online and rest is dine-in. So it will 100% depend on the geography you are sitting in, the kind of crowd you have around, and the accessibility to your outlet. One more question is from Mr. Taranjit Singh. He is asking that what is the investment in one franchisee and what return on investment you are expecting for next 1 year?
I think Samir, you and Deenal can take that question. Yes, Probably yes, when. yes, yes. For that, you can come to us, Mr. Taranjit. After this, I'll share my number and we are going to share our number. You can contact us for more detail. We are also in process of developing a FICO model. As of now, we are talking about a FOCO model. FICO model is a franchise invested and company operated model. So basically, our roles remain the same. It is even today that we are operating your outlet, but here we will partner up with you in taking care of certain expenses. Certain expenses will be 100% our responsibility. So basically, in a FOCO model, what happens is all the revenues fall into your books of account. It goes into your bank account. After taking care of all expenses like salary, inventories, rentals, etc., you pay us a management fee. FICO model, while we are working, it is a very reverse thing. It is a 100% investment model which you invest. All the revenues fall into our books of account, our bank accounts, out of which we pass on a certain percentage to you, from which you just have to take care of certain expenses like rentals and property related expenses. All salaries, inventories, light bills, telephone bills, etc., will be taken care by us. So I think we'll have that model up, and we should be having that model frozen in probably about a week's time. Again, he has asked what is the area required for operating franchisee. Mr. Taranjit, actually, I have shared a number with you in a chat box. Right? You can call us on that number. We'll share all the details. But generally, we require between, I would say, 700 to 1,000 square feet area. Again, depending on the geography. Yes. Again, if we talk about, say, Bombay, Borivali would need about 1,500 square feet, whereas a place like Mindspace would need about 700 square feet. If we talk about Dakshination, we are looking at anything between 1,200 to 1,500 square feet. Yes. And for a food court format, you can start in a smaller format also. Maybe 200 to 250 square feet, yeah, absolutely. Yes. So it will vary as per the location. Yes. So anyone have any query? I think all sorted. What changes do you foresee in your profit and loss from Mr. Ravi Gaga? Profit and loss means allocation of expenses. Okay. Allocation of expenses, like I said, the only additional expense that will increase will be your chemical costs. Your remaining costs would remain the same. But at the same time, unless and until the market scenario gets back normal, people start moving out, eating out, we would be working heavily on reducing expenses like additional manpower. We would be looking, like I said, we'll be looking at multitasking, wherein we maintain a minimalistic manpower at your outlet. And that, I think, would cover up for more than that you will be spending on the chemicals and hygiene. Thank you, sir. Means allocation of expense appreciated. Okay, yes. What will your marketing strategy as franchisee post COVID-19 immediate period? Like I said, we'll be aggressively not only marketing, but we'll also be following very, very stringent steps on hygiene. We will be looking at sanitizing the kitchen, sanitizing the space at least twice a day with industry level sanitizers, the mist type that you see. All your crockery, cutlery is thoroughly sanitized day in and out. We would be operating at about 60% for the initial 2-3 months, wherein you have to maintain the social distancing. So every alternate table will be occupied, and with the smaller outlets, we are working with our interior designers. How can we maximize the seating and also maintain the social distancing at the same time? There is a very, very, very detailed guidelines issued by FD and FSSAI, which I think all the restaurants will have to follow in terms of kitchen hygiene and dining.
Do you feel that you will focus only on tier 1 cities? What exactly can be done? No, we will not focus only on tier one cities. Yes, but the potential that a tier one city and a tier two or tier three city have are totally different. Like I said, we open very select stores. We do not make it abundantly available. So a city like Ahmedabad today has just 3 outlets. Gandhinagar has 1 outlet. Ahmedabad probably has a potential of 1 or 2 more outlets. We'll never have Ahmedabad flooded with 12 outlets. So similarly, a tier one city like a Mumbai would have potential of 1 outlet every 4 kilometers, whereas in a city like Ahmedabad, we look at opening in 1 outlet every 8 to 10 kilometers. That too specific to areas where there are a lot of working class, there are a lot of cosmo citizens, where there are a lot of people for whom cooking is a luxury. Yes. Got it. One question. How do you see delivery business and how to manage margins as aggregators charge much more? Aggregators, okay. Now, as I said, our pilot outlet is doing about 55 to 60% business online. So, as I said, we are into business of khichdi. So, our food cost is not very high. So, our menu and the rates are worked out in a very clever manner that even after giving out a discount of 20-25% aggregate, you do not hit the roof with your expenses. So as of now, Ahmedabad is operating at about 26% with Swiggy and 24% with Zomato after including GST. The restaurant bodies are trying very hard to get the GST credit that the restaurants are not getting today. So even after a lot of online business that we are seeing, we are not facing that difficulty at this. There are 2 more questions. From Mr. Okay, Ashik. all property rentals, all the agreements have been taken care by all individual franchise owners. Now, unless and until your agreement calls for a force majeure, I do not see a legal waive off of rentals from the property owner's side. So it 100% depends on how you can sit with them, how you can talk with them. Because see, you also have to understand one thing, that a property owner has invested millions into purchasing that shop. He too has to pay loans. He too has expenses on that property. So even he at this point of time is having a zero income from that property. So it is a very vicious circle that unfortunately all of us are into. We all have our expenses to take care of with almost zero income coming in. So I think a good dialogue is the best way out, or how you can manage it. Like even our agreement does not have a force majeure in it. So we are again in talks of working out an installment system wherein he can probably waive off a rental for 15-20 days, and the remaining we can give him across the year after dividing into some months. There was a question from Ashik Parwan. Post-lockdown period, what is an expected impact overall on restaurant business? I think post-lockdown, the restaurant industry, in fact, a major retail industry would go into a major correction. All unbranded spaces, all places which were not run by experts. Probably Ahmedabad saw a trend wherein haphazard opening of restaurants and cafes took place, which was not run by people who had expertise in it, but hired consultants to take care of their business. So places like those would definitely face a lot of challenges. Places who have invested a huge amount on their interiors or setup costs will see would face a lot of challenges. And at the same time, places that did not keep rentals in check and does not have a waiver at the same time will be facing a lot of challenge. COVID has put almost all retail spaces into a reality check, and I think it would be a survival for the fittest in the times to come.
Yes, we can always help you with do a third party agreement with the landlords. We have a legal team who can probably read your agreements or give you a sample copy that you can do a lease with. And somewhere down the line, if I talk, that's our personal understanding, what we have observed or we have analyzed as a franchise team. Yes, and every business are going to face challenges, but if I consider about all the retail business, apparel industry, footwear industry, kind of retail will face major challenge, but food industry will get settled down very soon, because ultimately कहते हैं ना, शॉपिंग आप साल में एक बार कर सकते हैं, बट फूड यू नीड थ्राइस अ डे, राइट? सो यू कैन कॉम्प्रोमाइज, यस, you can compromise in the, you don't go for a luxury, but food is not a luxury, it's a need based thing. Exactly. As more and more people will get more busy in handling their businesses, their challenges, so definitely jitna challenges aayenge, they will rely more on such kind of services. Deliveries pick up zyada karenge, this is what I believe. Yes, hygiene factors will be there, तो hygiene factor को consider करके people will, you know, थोड़ा challenges रहेगा, but gradually, because every restaurants are going to follow the WHO guidelines, right? तो because virus food में तो आने नहीं वाला है. Yes, so it's a more of delivery part, hygiene part we need to take care. Also, sorry to interrupt, Samir. What we are seeing at the same time, there are a lot of speculations that the delivery business will skyrocket post-COVID. Certain people, on the other hand, also feel that it might just happen the other way around. What happens is that people have been sitting at home for more than 60 days. They have been locked down into their houses. So going out, yes, will definitely happen. Maintaining the norms issued by the government of regular social distancing and for taking care of personal hygiene. And at the same time, like you must have recently read that in Delhi, one pizza delivery boy infected, delivered to 72 families, and all of them were quarantined. So in less than 4 hours of spreading that news, the deliveries reduced from were reduced to about 40%. If I talk about Ahmedabad numbers, Ahmedabad as a city used to see about 42,000 deliveries a day, combined with both Zomato and Swiggy. With the lockdown in place, the restaurants were given permission to operate for home deliveries. However, their per day did not exceed 5,000 deliveries a day. So the fear of some unknown party delivering food to your place is definitely there in everybody. And I, on the other hand, feel they might just start going out again instead of calling for food at home, because one, you don't know who's delivering to you, and two, you have been locked down for a very long time in your houses. There is one more question. Okay, so before these online aggregators came into picture, you always had 2 or 3 people who with their motorbikes used to go and deliver food. The only difference between having a self-delivery model and an aggregator delivery model is, with a self-delivery model, the amount of marketing you have to do to make your one outlet stand out is very huge. That is one. Two, whether your business happens or not, you have a fixed expense on your hands in terms of those salaries, the maintenance of those bikes, etc. The help that the online aggregators are doing is they are not only delivering on your behalf, but it's also getting you a chunk of business that is beyond your self-serviceability. So their algorithms are so smart. Their algorithms are based on demand-supply norms. So if, let's say, in an afternoon when there are not a lot of orders falling onto an app, they increase your serviceability, they increase your delivery radius. So let's say they are giving you a 3-kilometer dedicated radius, but when there are low odd number of orders across the app, they might just increase it to 6 kilometers or 7 kilometers or 8 kilometers. So those are the geographies that sitting at one outlet, you would never even think of exploring, or you would not want to spend on something that is beyond your own reach. So it is, like I said, it is now the experts will take care of what they do the best. So
delivery and bringing the delivery orders is their forte. I think we should live up to them and not get into self-made expenses to do that. I think should also maintain transparency with guest. Yes. We have to. It is a very recent rule that customers should be allowed into the kitchens, but we have been practicing that since day one. Anybody who says we want to see your kitchen, and they are most welcome, provided they take care of their personal hygiene and they are not a hindrance to the operations. They are always welcome to see the kitchen. Yes. Right. So I hope now there are no further queries. Right. So thank you very much, everybody. You have been a very nice audience, and you asked many questions, and I hope we were able to resolve all your queries. Just to brief you, tomorrow we have one more webinar that is a different topic. Me and one of the business management consultant, Ashfaq, will be there tomorrow at 3:30. We'll be sharing the link soon with all you people. And if you are having your own business apart from franchisee and you have some management issues, what to post COVID, and there will be queries. So Ashfaq and me will be there to guide you about franchisee and your normal businesses also. So thank you all of you. Thank you so much. You can keep in touch with us through our website www.franchiseinsider.in. We have our Facebook page also on that is in the name of Franchise Insider. We are on Instagram. You can follow us on Instagram, and we have our YouTube channel again in the name of Franchise Insider. We have put some franchisee videos also on that, so you can follow us on every platform, and you can call us on the given numbers. I think I shared that sheet with you. And you can get our number. I have shared that number on chat also, chat box. So you can get in touch with us. I'll share that screen with you, the last screen. And then we'll end this session. Just a second. This is the number you can contact us. For any queries, you can note it down. You can take a picture of this. So thank you very much, everybody. Keep in touch. Keep healthy. Stay safe. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, take care. Yeah. Thank you, Preet Bhai, for your wonderful inputs. Thank you so much. To all the audience. Thank you so much.